Hello friends, here we are discussing different concepts related to education, which helps pupil teacher in their preparation for many academic and entrance examination. Welcome to Vibrant Classroom. Hi friends, again welcome to the next part of evaluation. Here in this part we discuss the concept of assessment and evaluation. So it is a very important class. Here we discuss the concept of assessment clearly, minutely, different type of assessment also we discuss here. And also evaluation, the concept of evaluation, the purpose of evaluation. And class to discuss their interrelationship, assessment, evaluation and measurement. এই তিনটা ভিতরে কোন ইন্টাররিলেশনশিপ আছে তাকে আমি ডিসকাশন করিব। সো লেটস স্টার্ট। ফার্স্ট কনসেপ্ট ইজ অ্যাসেসমেন্ট। তো বেলে বেলে আমকু কনফ্यूजन আসে অ্যাসেসমেন্ট কোনটি ইউজ করিবা, মেজারমেন্ট কোনটি ইউজ করিবা, ইভালুয়েশন কোনটি ইউজ করিবা। জেনারেলি অ্যাসেসমেন্ট আর ইভালুয়েশন ভিতরে বহু কনফ্यूजन আসে। তো আমি চেষ্টা করিবা এই জায়গায় কিছু কনসেপ্ট কো আমি ক্লারিফাই করিবা আর নিজে এনালাইজ করিবা যে what is the basic difference between assessment and evaluation and where we use the word assessment and where we use the word evaluation. Okay, so here assessment is a systematic procedure of collecting information that can be used to make inferences about characteristics of people or object. Okay, तो केवल जे पीपुल उपरे इंडिविजुअल बा लिविंग क्रिएचर उपरे आमे असेसमेंट करती ता नुह, डिफरेंट ऑब्जेक्ट उपरे भी असेसमेंट करती, बट इन एजुकेशनल पर्पस प्रोसेस we also assess both the thing people, the individual who are present in our educational institution or organization, as well as the objects. Okay, so here in the process of assessment we can use the process of assessment for collecting information regarding different people and objects. So here assessment is referred as a process of collecting evidence and making judgment, related to outcomes. When we adopt some assessment procedure, after that we must get a result, and by the help of this result the teacher can collect the evidence about the problem of an individual, and as well as the teacher make judgment about the student or individuals. Okay, it is said that assessment has a narrower meaning than the evaluation, but a broader meaning than the measurement. That means assessment को evaluation और measurement को जदि रखिबा तो evaluation फास्ट आसीबो, ता ऊपर को आसीबो तमरो assessment, ता ऊपर को आसीबो ता ऊपर को आसीबो इभालुएशन. सो एई प्रोसेस रे आसीबो हम आगु गले आउ टिके क्लैरिफाई तारो क्लैरिफिकेशन हमें करिबा. इन इट्स डेविएशन द वर्ड एसेस, इ जो वर्ड एसेस रु असेसमेंट आसी, सी वर्ड लिटरल मीनिंग कोन टू सिट बिसाइड. दैट मींस समवन सिट बिसाइड अस फॉर हेल्पिंग. दैट इज another meaning is to assist to judge. Okay, that means someone sit beside us and that individual helps us to solve different problems which are arise in a sudden manner, and also that individual provides some feedback to the for the purpose of solution, and also to assist the judge. Okay, तो जजमेंट करिया पई हमकु से हेल्प करिवो, असिस्ट करिवो. जो असिस्ट रो माने हमें जानि परछोती हेल्प. It reflects that assessment is a process of gathering data and fashioning them into an interpretable form. Okay, तो process of assessment रे हमें कोन करिवा ना डाटा को गैदर करिवा, डाटा कलेक्शन करिवा, एंड आल्सो से डाटा को केमिति इंटरप्रिटेबल फॉर्म को आनिबा से काम मध्ये ए प्रोसेस रे करा जिवो. जजमेंट कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ assessment. अब assessment एक्चुअली जजमेंट दिए नहीं, बट इट हेल्प्स फॉर द जजमेंट. ओके, क्लियर हो कांसेप्ट को. assessment judgment दिए. In the process of assessment we cannot judge anyone, only we help anyone or provide feedback to that individual, okay, for solving the different problem. But
जजमेंट जितेबाला दिया से जजमेंट प्रोसीड्योर को जीवा बेले असेसमेंट किंतु हेल्प करिवो ओके if you think of classroom assessment you can say that when a teacher observe the learner in the process of learning collect feedback on their learning and improve his or her teaching learning strategy to facilitate them for maximum learning she or he is doing an assessment तो assessment concept को जहाँ बुझिले ठीक अछि तो आमे वर्तमान आउ टिके अलगा वे रे ताकू टिके एनालिसिस करियो ठीक अछि तो जो असेसमेंट कथा कुआ गला एठी दीटा कथा ऊपर आमे टिके फोकस्ड होबा प्रथम कथाटी कोन ना हेल्प सेकंड कथाटा फीडबैक ओके तो दीटा वर्ड पाखा पाखी समान बहु जगह रे आमे ताकू यूज करि सारिलुनी फीडबैक एंड हेल्प ओके तो हेल्प आउ फीडबैक केते बेले दिया जो कांसेप्ट को हम क्लियर होगा हेल्प आउ फीडबैक केते बेले दिया जो जते बेले गोटे पिलाटी प्रॉब्लम रे अछि ओके when an individual or our student face any problem in process of teaching and learning at that time they need help or by helping anyone a teacher provides some sorts of feedback okay तो एटा केते बेले होबो जते बेले मन रखो जते बेले टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चली छी पिलार प्रॉब्लम पिला शो करूची सेही समय रे आमे पिला को फीडबैक दबा ताको हेल्प करबा टू जस्ट ओवरकम द प्रॉब्लम और द क्रिटिकल सिचुएशन व्हिच फेस्ड बाय द इंडिविजुअल सेटु सी ओवरकम करि आसीबो आउ से कोन करबो ना से प्रॉब्लम को सॉल्व करिकि आगु आगु बढ़ि जीवो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे टुवर्ड्स द गोल दैट इज द कांसेप्ट ऑफ असेसमेंट just solve the problem and go forward clear to all assessment is considered as a part of teaching learning process remember that assessment is an integral part without assessment ame kebe भी पाठ पढे परिबा नाही that is very impossible तो आमे assessment को कोन करंती ना ताकू इनफॉर्मली करंती फॉर्मली भी करंती तो विभिन्न वे रे आमे assessment करंती और मैक्सिमम टाइम आमे देखंती इन आवर क्लासरूम सिचुएशन टीचर कंडक्ट असेसमेंट प्रोसीड्यूर इनफॉर्मल वे ओके तो असेसमेंट जो कथाटा थिला ताकू आगुरु जो जते बेले सीसी लागू हला एनसीएफ 2005 रे तो से प्रोसेस रे डिफरेंट वे रे असेसमेंट को करा जाउथला बट नाउ इट इज द कांसेप्ट ऑफ असेसमेंट इज टोटली चेंज्ड आगुरु कोन थिला ना असेसमेंट को से माने एफए 1 FA2 SA1 FA जोटा कि हम कहउछथि फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट एही हिसाब रे उटे टाइम बाउंड प्रोसेस रे ताको करिया कथा कुआ होतला बट नाउ इट इज से कांसेप्ट आ नाही असेसमेंट को हमें जते बेले चाहिए सेते बेले करि परिबा जते बेले हमर नीड आसीबो जे हां हमकु वर्तमान पिलार प्रॉब्लम सॉल्व करियार अछि पिलार प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करियार अछि तो सेही समय रे वी कैन असेस आवर इंडिविजुअल और स्टूडेंट्स ओके so that is a part of considered as a part of teaching learning process and often categorized as कोन categorization करा हिछि ताकू assessment of learning assessment for learning and assessment as learning okay here the process of assessment categorized into three category the first one is assessment of learning of कथाटा को हम टिके उडिया रे भी ताकू सहज करिबा assessment for learning and assessment as learning okay let us elaborate such categories to understand it the first concept of categorization of assessment that is assessment of learning here it basically focus on learners achievement against some predetermined outcomes okay so here in a educational process we prepare the predefined outcomes for a year for a month for a term okay so ए जो टर्म एंड बा जो प्रिफर्ड आउटकम जो आमे सेट करछथि से आउटकम केते पर्यंत पिला अचीव कले कि नाही से ताकू ही फोकस करिबा प्रोसेस को असेसमेंट रे हुए असेसमेंट ऑफ लर्निंग रे हुए एंड समटाइम्स इट इज रेफर्ड एज ए समेटिव असेसमेंट दैट मींस सम टोटल ऊपर जते बेला हम असेसमेंट करूचंती गुटे बंच ऑफ कोर्सेस को नेकी तो सेही प्रोसेस टा को हमें कोन कहउचंती ना
assessment of learning बोली कहउछथि of जो कथाटा हला र आमे जानि जति ओडिया रे तको र बोली कहउथि so learning raw assessment total overall learning raw assessment process टाकू assessment of learning बोली आमे कहउछथि तो assessment raw learning learning of बा learning raw assessment माने कोन हम बुझिबा जे total overall learning रो assessment generally teachers undertake this type of assessment at the end of unit term or semester in order to grade or rank the learner so that the why we adopt the assessment of learning and when at the end of the unit ame assessment of learning karanti summative assessment karanti term end रे करंती सेमिस्टर एंड रे करंती तो ए सब केते बेले हुए असेसमेंट लर्निंग ए जगह रे हमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग करंती अब कोन पई करंती ना टू प्रोवाइड ए ग्रेड और रैंक टू द लर्नर्स अकॉर्डिंग टू न्यू साउथ वेल्स एजुकेशनल स्टैंडर्ड अथॉरिटी assessment of learning it is used to plan future learning goals and pathway of for students कारण ए जगह रे assessment of learning जो जगह रे होबो हमें पछु फेरिबा कष्ट पछु रिटर्न करी होबो नाही that is very difficult for the teacher as well as for the class so assessment of learning provides some sorts of information about our individuals or our students by which we can plan for their futures and also show the pathway for the students providing evidence of achievements of wider community including parents educators the student themselves and outside groups so assessment of learning re jo result ame pailu these results are discussed or shared with the parents educators students and outside group eman ko soito share kara jai paribo and provide a transparent interpretation across all audiences आउ असेसमेंट ऑफ लर्निंग थ्रू रे जो हम रिजल्ट पाउचंती जो स्कोर पाउचंती ताको प्रॉपर्ली आउ फेयरली ताको इंटरप्रेट करबा दरकार ओके देन द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर माने हमें जानि जति उडिया रे ताको पाई बोली कहउती लर्निंग पाई असेसमेंट जते बेला हमें पढुचंती ऑनगोइंग प्रोसेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जते बेला चली ची क्लासरूम रे एट दैट टाइम the assessment procedure which are used by the teacher that type of assessment is known as assessment for learning here it predicted by the teachers during the teaching learning process already we discussed during the teaching learning process its main objective is to improve teaching and enhance learning teaching process को improvise करा हो और learning process को enhance करा जिवो by facilitating learners it takes place along with the teaching learning process टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चालू थो ता सहित असेसमेंट फॉर लर्निंग भी चली थी इट इज मोर फ्रीक्वेंट मोस्टली ऑन स्ट्रक्चर ओके जो हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कथा कहलु दैट इज ए स्ट्रक्चरल प्रोसेस दैट इज ए फॉर्मल प्रोसेस बट हियर असेसमेंट फॉर लर्निंग इज मोर फ्रीक्वेंट एंड मोस्टली ऑन स्ट्रक्चर हमें पढेला बेले फॉर्मली हो नॉन फॉर्मली हो हमें कोन करंती ना असेसमेंट करि चलंती से असेसमेंट प्रोसीड्यूर को हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग बोली कहउचंती एंड आल्सो रिफर्ड to as formative assessment of learning टिकेट देखि दबा assessment of learning summative assessment okay assessment of learning हमें कहलु summative assessment for learning formative assessment always remember okay according to NSWESA जो हमें आगे डिस्कशन करी गले जो एब्रिविएशन टा it reflects a view of learning which assigns assessment helps students learn better rather than just achieve a better mark okay assessment of learning रे mark ऊपर टिके फोकस रुहे but here in the process of assessment for learning ए जो achieve better mark को हमें सेतटा इंपोर्टेंस दियंती नहीं हमें केवल स्टूडेंट कर बेटर परफॉर्मेंस ऊपर फोकस्ड होंती It involves formal and informal assessment activities as a part of learning and inform the planning for the future learning. Okay, because that is an ongoing process. So at the time of learning, we can find out a lot of problems from the student side, and these problems helps the student as well as the teacher to prepare for the future learning process. It includes clear goal for learning activity.
आउ से कौन करिवो ना क्लियर गोल असाइन करिवो का पई ना लर्निंग एक्टिविटी पई इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव फीडबैक दैट मोटिवेट्स द लर्नर ओके फीडबैक कथाटा मु जस्ट आगु कहि के आस्थिली असेसमेंट केस रे तो फीडबैक दबो इफेक्टिव फीडबैक दबो मोटिवेट द लर्नर्स कैन लीड टू इंप्रूवमेंट देन रिफ्लेक्ट अ बिलीव दैट स्टूडेंट्स कैन इंप्रूव ओके ये जो प्रोसेस रे आमे एनकरेजमेंट करेबा पिला को मोटिवेट करेबा फॉर देयर फ्यूचर इंप्रूवमेंट इट एनकरेज सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस आल्सो एंड पियर असेसमेंट निजो को निजे असेस करिवो बा जो फ्रेंड सर्कल भितरे से रहउची से माने ताको असेस करि परिबे इट्स अ पार्ट ऑफ रेगुलर क्लासरूम रूटीन इन्वॉल्व्स टीचर स्टूडेंट एंड पेरेंट रिफ्लेक्शन ऑन एविडेंस इट इज इंक्लूसिव ऑल ऑफ ऑल लर्नर्स ओके सो एटा को आमे काहा गुटे करिबा असेसमेंट आउ काहा करिबा नि सेमिति हुए नाही assessment for learning meant for every individuals of our classroom because as a teacher you must ensure the development of every individuals okay then the next point that is assessment as learning the third one is when learner are asked to assess their performance on their own okay ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ assess କରିବା ଶିଖିବେ that process of assessment is known as assessment as learning assessment for learning रे term end रे होतला summative assessment रे होतला assessment of learning रे sorry of learning रे गला assessment for learning रे ongoing process रे हम assess करू पिला को and assessment as learning रे we can create such type of environment for our student where students should assess themselves by their own process they use various assessment techniques and strategy to assess themselves. This practice helps learner to identify their knowledge gap, कोन जगह रे तांकर प्रॉब्लम क्रिएट होची कोन गैप क्रिएट होची adopt appropriate learning strategy and use assessment as a tool for new learning. आउ कोन करिवो ना नुवा नुवा assessment technique और tool को यूज करिवो न्यू process of learning रे निजो को इन्वॉल्व करिवा पाई ओके so according to NSWESA assessment as learning encourage student to take responsibility by their own learning निजर learning रे निजर responsibility निजे नेबे require student to ask questions about their learning कोन ताकर प्रॉब्लम रहउची कोउटी से माने कोन होउचोती ना रही जाउचोती कोउटी आगु को बढ़ी परनाती से सब जिंस से माने केमिति फ्रीली क्वेश्चंस एराइज करि परिबे से बाबद रे हम तांको facilitate करेबु विभिन्न कथा को नेकी then involve teacher and students to creating learning goals and encourage growth and development here at that process teacher is only the path provider students should find out their own problem and try to solve them okay तो सही कथा से कहूची involve teacher and student in creating learning goals encourage growth and development then provide ways for the students to use formal informal feedback and self assessment to help them understand the next step in learning so in that process they also take help of other individuals like teacher parents other peer groups as well as self assessment procedure encourage peer assessment self assessment and reflection in the process of assessment peer assessment self assessment and reflection को हमें encourage करती and also another point that is very important that is metacognition metacognition in this process of assessment we found the concept of metacognition own analysis of learning okay so these are the three components or जो contents of assessment for of learning for learning and as learning okay then come to the next point components of assessment what are the components of assessment is a system has certain components or variables which helps us to decide what kind of assessment strategy we can use को प्रकार strategy को हमें को जगह रे यूज करिबा सेहिति पई कोन कर हैछि ना विभिन्न assessment रो component को एठी डिफाइन करा हैछि Harlan has suggested the following components as or variables of assessment in a system कोन कोन देखिबा The first one is purpose. On the basis of purpose, केते बेले assessment करिबा केते बेले purpose कोन purpose अछि कोन मते ongoing रे करियार अछि
ना टर्म एंड रे करियर अछि असेसमेंट. So that is the purpose of assessment. According to the purpose of assessment, we have two types of assessment procedure, that is formative assessment and summative assessment. Then use. Okay, why assessment we conduct in our classroom or anywhere. काहे आम assessment काहे करूछु तार यूज कोन अछि. तो ता बेसिस रे तीनटा कैटेगरी कैटेगराइज करा गला. That is one, that is the first one is helping learning. लर्निंग को हेल्प करिबा, लर्निंग प्रोसेस को हेल्प करिबा, पिला को हेल्प करी केमि तक लर्निंग प्रोसेस को आगु नबा. इन्फॉर्मिंग दैट एंड इन्फॉर्मिंग टू टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट अबाउट द स्टूडेंट रो परफॉर्मेंस कोन अछि कोन नाही ए बाबद इन्फॉर्मेशन समस्त को पाखे रहइबा दरकार. एंड देन द ट्रैकिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस. पिलांकर प्रोग्रेस को जागा पर्यंत जाईची, ताको गोल को पहुंचिया पय से माने केते बाट अछंती, को प्रोसेस रे गले ताकर कोन डेवलपमेंट हेइची, ए सब जिंस को प्रोग्रेसिव प्रोसेस रे ए सब जिंस को हमें जज करिया पय हेले असेसमेंट को यूज करती. दैट इज कम अंडर यूज. ओके, देन टाइप ऑफ टास्क. केते बेले हम असेसमेंट करूछंती, को प्रकार रे असेसमेंट करूछंती, से बेस रे हमें चारिटा कैटेगरी कैटेगराइज करले. दैट इज रेगुलर वर्क, देन टास्क और टास्क्स डेवलप्ड बाय द टीचर, देन एक्सटर्नली किछि जदी टास्क आसिला हम पाकू काम दिया होछि पिला को, टास्क एम्बेडेड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे केमिति टास्क को हमें यूज करिकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आउट के एनहांस करिबा. सो डिफरेंट टाइम रे को टास्क पिलांक पय नेसेसरी अछि, से नेसेसिटीज को देखिकी एई कैटेगरी कैटेगराइज कराइछि, एई कंपोनेंट को डिफाइन कराइछि. द नेक्स्ट वन इज एजेंट ऑफ जजमेंट. ओके, हियर इन आवर एजुकेशनल प्रोसेस different persons or human resources are there. Okay, those who are helping in the process of teaching learning process. So by the help of these agents we also conduct different type of assessment. So agent, on the basis of agent of judgment we categorize three category. That is teacher, first human person by human resources which are generally available in our school and they are actively participate in the process of assessment. Second one is teacher and student together, both मिसी की जते बेले assessment कथा को जिबे participate करिवे, both आ assess करिवे for the development of both teaching and learning process. तो सही समय रे जो assessment होची सी भी agent under रे आसुची. The third one is external agent, जो माने outsiders, some NGOs or other eminent persons, other scholars, research scholars, they also conduct different assessment processes in our classroom situation, in our school. तो सही मन को हमें एक कैटेगरी रखिबा एक्सटर्नल एजेंट कैटेगरी. ओके, द नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज बेसिस ऑफ जजमेंट. को टाइम रे हमें जजमेंट दोउछथि, केमिति जजमेंट दोउछथि. द फर्स्ट वन इज नॉर्म बेसिस रे हमें जजमेंट दोउछथि कि गुटे नॉर्म बा हमें गुटे रूल रेगुलेशन फॉर्मेशन करछथि, सेही बेस रे हमें जजमेंट दोउछथि कि, तो जति दोउछथि ताले से जजमेंट बेस रे रहिला. सेकंड वन इज टास्क स्पेसिफिक क्राइटेरिया. जो कामटा हमको असाइन करा हिची, जो स्पेसिफिक टास्क टाको हम असाइन करा हिची, कोन पाई करा हिची, सेही काम कला परे तार कोन डेवलपमेंट होबो बा कोन डेवलपमेंट हेची बोली हमें जानिबा, कोन हमें ताको जजमेंट करि परिबा, सेही बेसिस रे टास्क स्पेसिफिक क्राइटेरिया. थर्ड वन इज जनरल क्राइटेरिया. जनरल बेस रे हमें विभिन्न टाइम रे असेसमेंट कंडक्ट करंती जनरल प्रोसेस रो लर्निंग को जज करिया पई. एंड नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट रेफरेंस्ड. कंपैरिजन करिवार अछि हमको, जदी स्टूडेंट बा आम स्कूल रो स्टूडेंट ता अलगा गुटे कोन स्कूल रो स्टूडेंट एमिति कंपैरिजन करियार अछि, जदी स्टूडेंट रेफरेंस फॉर्म रे हमें जजमेंट करि परिबा. नेक्स्ट वन इज फॉर्म ऑफ रिपोर्ट और फीडबैक. ओके, तो रिपोर्ट बा फीडबैक बेस रे हमें को प्रकार असेसमेंट करंती. द फर्स्ट वन इज मार्क और स्कोर बेस रे हमें दियंती पिला को असेसमेंट करंती, जे एई जगह रे तोर कम मार्क रहिला. फॉर एग्जांपल मु 10 टा क्वेश्चन देछि गुटे असेसमेंट प्रोसीजर रे, मु 10 टा क्वेश्चन पचारली बा देली जहां भी हो, तो मोर 5टा टॉपिक अछि, 5टा टॉपिक रु ईच टॉपिक रु मु 2टा क्वेश्चन प्रोवाइड करिछि. ठीक अछि, 2टा क्वेश्चन मु देखिबी 1 नंबर रो जो टॉपिक बा 1 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन से ठीक करछि, ता माने चैप्टर 1 क्लियर. 3 नंबर आ 4 नंबर क्वेश्चन से भूल करछि, ता माने सेकंड टॉपिक ता क्लियर नु. एठी हमर कोन आसिला ना जो फीडबैक रो कथा आसिला, मते सेही जगह रे सेही जो थर्ड और फोर्थ जो सेकंड चैप्टर रु आसी सेही चैप्टर रे पिलांकर प्रॉब्लम अछि, सेही चैप्टर रे फीडबैक देबी. ठीक अछि, तो सेही पे मार्क और स्कोर बेस रे जजमेंट करा जिवो बा असेसमेंट करा जिवो. देन प्रोफाइल, पिलांकर जो पास्ट प्रेजेंट प्रोफाइल को हम एनालिसिस करिकि ताको भी सेही
प्रोसेस रे हमें एसेस करी जजमेंट दे परिबा बा फीडबैक दे परिबा सॉरी जजमेंट में फीडबैक दे परिबा द नेक्स्ट वन इज ओवरऑल लेवल और ग्रेड और रैंक रैंकिंग बेसिस रे भी हमें ताको असेसमेंट करी परिबा देन नेक्स्ट वन इज कमेंट और ओरल फीडबैक एट दैट प्रोसीड्यूर इज जनरली यूज्ड बाय द टीचर इनसाइड द क्लास जनरली पिला को हम जेतले ऑब्जर्व करूछंती पिलाटी एई जगह प्रॉब्लम फेस करूछि देन हमें सेई जगह तर प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई ताको नेसेसिटी फीडबैक दे दोछंती ठीक अछि द नेक्स्ट वन इज मॉडरेशन मॉडरेशन को प्रकार रो को जगह रे केमिति मॉडरेट फॉर्म रे डिफरेंट वे रे केमिति हम असेसमेंट को रिप्रेजेंट करूछंती सेई प्रोसेस ता एई कंपोनेंट अंडर रे आछी दिस इज इन द क्लास और स्कूल इंटरनल प्रोसेस रे होची इंटर स्कूल मॉडरेशन प्रोसेस अलग अलग स्कूल को नहीं कि असेसमेंट होची एक्सटर्नल इंस्पेक्शन थ्रो रे आछुंती विभिन्न ऑर्गेनाइजिंग बॉडी बा एडमिनिस्ट्रेटिव बा सुपरवाइजिंग बॉडी आसी की असेसमेंट करी की जाउछंती एक्सटर्नल इंस्पेक्शन करूछंती से माने इनफॉर्मल एंड टीचर सेंट्रिक ओके एमिति इन जनरली पिला माने खेलुछंती टीचर बसी की देखुची पिला माने खेलुछंती तो से प्रोसेस रे भी पिला को टीचर असेस करि परिबो तो से जगह रे इनफॉर्मल बा टीचर सेंटर्ड असेसमेंट कुआ जाउची so these are the basic components of assessment and if you realize each and every point which are described here then that is easier for you to select appropriate assessment strategy for your student okay then come to the next point that is evaluation अब जहार जोटी असेसमेंट रे न बुझी हला कि प्रॉब्लम रहिची तुम कमेंट बॉक्स रे लिखियो ताको हमें मु ताको निश्चित भाव रे रिप्लाई देबी नहले तो केमिति वीडियो करी छाडी की ताको तुमको क्लियर करेबो ठीक अछि नेक्स्ट असला कोन ना इवैल्यूएशन नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट evaluation is a systematic process of collecting analyzing in order to determine whether and what degree objective have been are being achieved clear हो concept आमे जो असेसमेंट रो कथा पढुतले सी हमकु हेल्प करिवो गोल पर्यंत नबा पय किंतु गोल रे अचीव हैला परे हमर कोन कोन होउची से कथा को इवैल्यूएशन डील करिवो जो कथा रे किसी केमिति होबो ना दैट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस आमे प्रॉपर्ली कलेक्ट करिवा डाटा ताको प्रॉपर्ली एनालाइज करिवा ओके आउ एनालिसिस कला परे डाटा को से जो डाटा जो मिलिछि सेटा केते डिग्री पर्यंत गोल को अचीव करिवारे हमकु हेल्पफुल हेछि कि नाही ताकू शो करूछि कि नाही ताकू हम एठी देखिबा इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट इट लीड्स टू डिसीजन मेकिंग एट द टाइम ऑफ असेसमेंट वी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ओके कारण तमे जते बेले ऑनगोइंग रे अछो तमे जते गोटे प्रोसेस कामटे करूछो कामटा कोन होबो कोन नाही तमे के डिसाइड करि परिबो दैट इज वेरी इंपॉसिबल इवैल्यूएशन किंतु एंड पर्यंत जाय एंड रे कोन हैला सेते बेले हमें डिसाइड करि परिबा जे हम पिलांकर कोन डेवलपमेंट हेछि ना नाही सो इट इज लीड टू डिसीजन मेकिंग ओके एज अ टीचर यू शुड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन is to make a judgment about the quality or worth of something तो असेसमेंट प्रोसेस रे गुटे वर्ड को तमे फ्रीक्वेंटली यूज होबार देखिबो दैट इज मेकिंग जजमेंट ओके तो हमें जजमेंट केते बेले देई परियो जतो धरा जो गुटे कोर्ट रे केस अछि ठीक अछि तो कोर्ट केस रे जज जो बस्थांती जे विचारपति जज से कोन जो सेशन कोर्ट सेशन आरंभ होबा 5-10 मिनिट पर जजमेंट दे दियंती ना लास्ट पर्यंत सुनंती कांसेप्ट को बुझिबा एठी तो असेसमेंट प्रोसेस रे हमें कोन करथुले ना ऑनगोइंग प्रोसेस रे पिला को असेस करथुले फीडबैक दोथुले हेल्प करथुले कोन पई ना एट लास्ट जो गोल अछि हमरो जो ऑब्जेक्टिव हमरो अछि ताको फुलफिल करबा पई जदी फुलफिल हेई गला माने लास्ट पर्यंत बेले पिला जते बेले पळेई गले सेते बेले पिला पाखरे कोन कोन डेवलपमेंट हैला हमें जज करि परिबा सो इवैल्यूएशन इज हम कहि परिबा जे सेटा कहा सहित बेसी रिलेटेड हुए ना एंड प्रोडक्ट सहित रिलेटेड हुए ताको इवेल ऑफ फ्रिस्बी कहले ठीक अछि अकॉर्डिंग टू बेबी evaluation is the systematic collection and interpretation of evidence leading as a part of the process to a judgment of value with a view of action judgment रहिला ठीक अछि and also value को भी judgment करा जबो जो judgment रो कथा रहिला से judgment को कोन जज करिवो से ना different values because in our educational process
we tries to inculcate different type of values within our student. Okay, because nowadays in present scenario, in our society we found generally values are in a erosive manner, जोटी कि भैल्यूटा नहीं, भैल्यू गलानी धीरे धीरे इरोजन होची भैल्यू। तो भैल्यू को आपको पिला को जदी सिखेबार अछि डिफरेंट वैल्यूज, देन द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड द मोस्ट सुइटेबल प्लेस इज आवर स्कूल। तो एई जगह रे हमें प्रॉपर्ली तांको इवैल्यूएट करिवा आउ केमिति से माने वैल्यू को इनकलकेट होउची कि नहीं ताको भितरे बा से माने करूचोदी कि नहीं ताको हमें जज करिवा आ ता पय एक्शन नबा। If you analyze these definitions, you can identify 4 key elements of evaluation as follows. And that is, systematic collection implies that whether information is gathered should be acquired in a systematic and planned way with some degree of precision. Okay, clear go. तो आमको evaluation करिया पय हेले first important point, that is systematic collection of data. जदि data collection systematic न होइतिबो, then that is very impossible to evaluate properly to an individual. जेमिति कि वर्तमान आमे देखिबा गुटे एग्जांपल टे नबा क्लास 10th एग्जामिनेशन वर्तमान सब तमे जानिथिबो कोरोना पर गुटे नुवा फॉर्म रे एग्जामिनेशन होउची। कोन होउची ना एसए 1 होउची, तापरे एसए 2 हो, ता भितरे विभिन्न प्रकार छोट छोट सब एग्जाम होउची जो मार्क गुडा को की रखा होउची लास्ट जाय। तो so these are the systematic process of evaluation. Systematically different part रे हमें कोन करूछथि ना पिला को इवैल्यूएट करूछथि एंड एट लास्ट ए समस्त को मर्ज करी कि पिला को गुटे हमें तार कोन डेवलपमेंट हेरिछि कोन नाही हमें सिटी जजमेंट लास्ट रे पास करिवा एट द एंड ऑफ द कोर्स और टर्म। सो दैट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस, नहेले इवैल्यूएशन कंप्लीट हे परिबो नाही। Information gathered systematically should be carefully analyzed. खाली systematically collection कले होबो नाही, carefully ताको analysis करिया पय पड़िबो एंड इंटरप्रेट करिया पय पड़िबो different form of statistics रे। कारण जो कथाटा को हमकु जानियार अछि सेही वे रे हमें ताको इंटरप्रेट करी कि से कथाटा ता पाखरे हेछि कि नाही, तार इंप्रूवमेंट हेछि कि नाही, तार प्रोग्रेस हेछि कि नाही ताको हमें देखिबा। Superficial observation may lead to wrong interpretation. जदि हमें superficially for example मु कहली जे समेटिव 1 बा अदर जति एग्जामिनेशन हला बहु गुडे पिलाटी बहुत भलो मार्क रखिछि, भेरी माने कहबा कोन ना गुड स्टूडेंट बोली हमें ताको सेते पर्यंत कंसीडर करथि, किंतु एसए 2 रे कोन हला ना तार मार्क कमिला। तो गुड ए जो गोटे एग्जामिनेशन रे गोटे प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन रे बा गोटे प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन रे वी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन अबाउट द इंडिविजुअल, कारण से पास्ट जति एग्जामिनेशन दीची बहुत भलो करछि। तो गोटे एग्जामिनेशन रे किछि भी फैक्टर रही पारे, फिजिकली फैक्टर रही पारे, इमोशनल फैक्टर रही पारे, फैमिली, सोसाइटी। सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स आर देयर इन आवर सराउंडिंग व्हिच आर अफेक्ट आवर इवैल्यूएशन रिजल्ट। ओके, तो सेही कथा से कहूची जे सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन मे लीड टू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। जजमेंट ऑफ वैल्यू टेक्स इवैल्यूएशन फार बिहाइंड द लेवल ऑफ mere description of what is happening, but require judgment about the worth of an interviewer. Okay, तो कांसेप्ट को आउ टिके सरल कर दबा, देखि बुझिबा टिके भलो भाबरे जे मु उडे टॉपिक टे पढौछि, ठीक अछि, मु उडे एनवायरमेंटल एजुकेशन पढौछि। ओके, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन पढेबा परे मु देखिली जे पिलाटा जाई कि ता घरे गछडे काटुची, ता घरे विभिन्न अपरिष्कार टे पकाउची, ता घरे लाइट जळुची फैन चालुची से किछि बुझु नै पड़ी आसुची, पानी नष्ट करूची। ता माने मु जो एनवायरमेंटल एजुकेशन ताको देइची से एनवायरमेंटल एजुकेशन ता प्रॉपर्ली से गेन करी नै, मार्क रखि थाई पारे, कांसेप्ट हला मार्क से रखि थाई पारे, किंतु ता पाखरे एक्चुअली जो वैल्यू इनकलकेट होबा कथा से वैल्यूटा इनकलकेट हेई पारे ना। एंड इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन वी कैन माइन्यूटली ऑब्जर्व the value which are inculcated within the individual or not. A view of action means every decision has a specific reference of action. It may be conclusion oriented or decision oriented, because जेहेतु इवैल्यूएशन टा एंड प्रोडक्ट सब बळे लीड करूची, सो दैट इज जोटा हम कहि परिबा कंक्लूजन ओरिएंटेड और डिसीजन ओरिएंटेड कांसेप्ट। क्लियर? देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवैल्यूएशन गुड इवैल्यूएशन हमें काहा कहबा केमिति कहबा एज ए टीचर वेदर यू आर इन्वॉल्वड इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस आगु को तुम जीव you should ensure that evaluation should have the following characteristics which are often termed as elements of good evaluation कौन कौन देखिए okay for maintaining good evaluation we must maintain these criteria that is validity reliability practicability fairness usefulness or usability so these are the basic component of evaluation procedure and if we maintain all these evaluation characteristics in a proper manner then our evaluation procedure is become a good evaluation so ei concept को आउ टिके further clear discussion करिया the first one is validity जोटा कि आमे वर्ड आमे जानि परछुदी valid कोन ना जो जिंसटा true purely true that is valid concept okay a valid evaluation is one that actually tests what is set out to test जोटा टेस्ट करिया पई चाहू सेटा एप्रोप्रिएटली टेस्ट होउची कि नहीं आमे जानिबा केमिति ना बाय द प्रोसेस ऑफ वैलिडिटी दैट इज वन व्हिच एक्चुअली मेजर द बिहेवियर डिस्क्राइब्ड बाय द ऑब्जेक्टिव्स अंडर स्क्रूटिनिटी ओके तो मु पर्टिकुलरली जो बिहेवियर बा जो कांसेप्ट को जो जानिया पई चाहूची जे सेही कथाटा ताको पिलांक पाखरे डेवलप हेइची कि नाही मु जदी पर्टिकुलरली सेटा को जज करूथुबी बा सेटा को इवैल्यूएट करूथुबी ताले सेटा वैलिडिटी इवैल्यूएशन वैलिड इवैल्यूएशन बोली आमे कहबो ठीक अछि तो याको आउ टिके सहज करी बुझिबा धरा जो मु गुटे पिलार इंटेलिजेंस मु टिके साइकोलॉजिकल जो टेस्ट में जो एस्पेक्ट आडू जाउची तो मु गुटे पिलार इंटेलिजेंस आईक्यू टेस्ट करिया पई चाहूची ठीक अछि ओके तो ता पाई मु कोन कली ना गुटे क्वेश्चन सेट तयारी कली सेट ऑफ क्वेश्चन जोटा की टीचर तयारी कला ओके तो से सेट ऑफ क्वेश्चन को मु मो पिला को ऊपर अडॉप्ट कली तापर कोन मिलला मते स्कोर मिलला तो ए जो टेस्ट मु तयारी कली सेट ऑफ टेस्ट जो मु तयारी कली सेटा वैलिडिटी को मु जानिया पे चाहि केमि चाहि मु सिटी कंपेयर करी कहा सहित ना गोटे प्री डिफाइंड बा हम कहउछनी स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ टेस्ट जोटा अछि जेमिति कि मु कहली बिनेट जोगर जो आईक्यू टेस्ट अछि स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ टेस्ट अछि सेही पिला को ऊपर अगेन मु तको एडमिनिस्टर कली रिजल्ट पाई तो जो स्कोर मोर थिला आ जो स्कोरटा मु बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट को पाइली जदि मु सेही दीटा टेस्ट भितरे कंपेयर करिवि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जदि बाहर करिवि तो आगु आमे गले जो ई तमरो इवैल्यूएशन चैप्टर रे अछि आमे गले कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कथा कहबा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तमरो जते पॉजिटिव होबो ताको भीतर रिलेशनटा बा सेही जो दीटा टेस्ट प्रोसीजर भीतर रिलेशन बेटर हो ता माने तमो टेस्टटा सेते वैलिड हो जदि कोएफिशिएंट कोरिलेशन ता नेगेटिव आड को जीवो ताले ता भीतर गोटे गैप क्रिएट होछि ता माने तमो टेस्टिंग प्रोसीजर इज नॉट गुड टू फाइंड आउट एक्चुअल आईक्यू लेवल ऑफ द स्टूडेंट वैलिडिटी रो कांसेप्ट ला हिया तमे जोटा मेजर करिया पे चाहू सेटा जदी तमरो एप्रोप्रिएटली तो मेजर करूचो दैट मींस योर टेस्टिंग प्रोसीजर बाय योर इवैल्यूएशन प्रोसीजर इज वैलिड अदरवाइज नॉट तो आउ टिके आहुरी सहज करी टिके बुझदवा वैलिडिटी आमे समस्त बाय घंटा अछि हम घरे घंटा अछि आमे जो घंटाटा देखुचंती उटा पर्टिकुलर टाइम आमे ताकू देखिले जे एई समय रे घंटा रे एतकी बाछि ठीक अछि तो मु जदी सेही समय रे धर जो हम इंडियन रेलवे रो जो टाइम टा को हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ टाइम बोली को तो सेही इंडियन रेलवे टाइम सहित मो टाइम को मु कंपेयर करी देखिबी जदी किछि प्रॉब्लम डिस्टरबेंस थिबो ताले मो घंटाटा वैलिड नो आ जदी मो टाइम टा जहा अछि रेलवे टाइम टा भी सही अछि ता माने मो घंटाटा को वैलिड घंटा कहि बिकॉज़ रेलवे टाइम बा रेलवे जो टाइम टेबल टा बा टाइम जो कथाटा हम कहउछथि दैट इज ए स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ टाइमिंग बोली हम कहउथि ठीक अछि तो these are that is the very basic concept of validity आ जदी केते बेला आगु validity रो concept आसे हम आउट के elaborately ताको डिस्कशन करिवा ठीक अछि the next one is reliability it is a measure of consistency with which the question test examination produce the same result under different but comparable conditions that means एठी जगह रे कोन कहला सी मु गुटे क्वेश्चन तयारी कर ठीक अछि तो से क्वेश्चन टा मु मो क्लास रे अडॉप्ट कर पिला को पाखे रिजल्ट पाई
मोर एक्स वाई आउ जेड तीनटा पिलांकर रिजल्ट को मते देखिली कोन ना 50 मार्क रो एग्जाम करथिली एक्स रखिला 40 वाई रखिला 44 और जेड रखिला 36 ठीक अछि सेम टेस्ट प्रोसीड्यूर को मु आफ्टर सम डेज 15 दिन 20 दिन 25 दिन 5 दिन जहा होची हो किछि दिन परे मु टेस्ट को पकेइला परे जदि x सेम टेस्ट को x जदि सी 40 रो पाखा पाखी 39 कि 41 ई पाखा पाखी रखिला सेकंड टाइम टेस्ट रे ताहले मु कहिबी जे से टेस्टटा बा ये भी सेमिति पाखा पाखी रखियो ये भी सेमिति पाखा पाखी रखियो सब पिला जदि सेकंड टेस्ट रिजल्टटा भी सी पाखा पाखी रहिला ताहले मु मो टेस्टटा को रिलायबल टेस्ट बोली कहिबी जेमिति कि हम बुझुवा एटे घंटा को नहीं तो आज यही समय रे मो घंटा जति टाइम दोची काली जदि ठीक यही समय रे मो घंटाटा सेति टाइम दोथुबो ताहले तार ट्रुथफुलनेस अछि ओके तो सेही प्रोसेसटा को हमें रिलायबल बोली कहिबा जहार ट्रुथफुलनेस था the reliable evaluation mechanism is independent of the characteristics of the individual evaluator okay the next one is practicability that is the practical uses evaluation produces should be realistic practical and efficient in term of their cost time taken and easy to application okay fairness evaluation oh sorry eta gote point thila mo seti point ta seti तळकु आनी नै एट देखि दो एटा गोटे अनदर पॉइंट तो प्रैक्टिकेबिलिटी कोन ना आमे जो कथाटा पिला को सिखौचंती से कथा को यूज करी कि ता प्रैक्टिकल लाइफ रे किछि बेनिफिटेड होउची कि नाही बा से प्रैक्टिकल लाइफ रे से जिंसटा को से यूज करूची कि नाही से कांसेप्ट को हमको ऑब्जर्व करिया पे पड़िबो जदि हम गोटे गुड इवैल्यूएशन रो कथा कहउछती द नेक्स्ट वन इज फेयरनेस इवैल्यूएशन मस्ट बी फेयर फॉर ऑल द लर्नर्स विदाउट एनी बायसनेस वी मेंटेन और वी कंडक्ट evaluation procedure. It can be possible by accurately reflecting the range of expected behavior as desired by the course objective. ये मोर चिना परिचय पिला ताकू मु टिके अलग प्रकार इवैल्यूएट करबी ये मते भल लागे नाही मु ताकू अलग प्रकार इवैल्यूएट करबी सेमिति होबो नाही समस्त को फेयरली इवैल्यूएट करिया दरकार दैट इज कॉल्ड फेयरनेस द नेक्स्ट वन इज यूजफुलनेस इवैल्यूएशन शुड बी यूजफुल फॉर द लर्नर्स दैट मींस जो आमे इवैल्यूएशन करूचोती से इवैल्यूएशन परे ताका पाखरे जो कथाटा डेवलपमेंट होबो these things must be used by the student or individuals in their life feedback from the evaluation must be made available to learner to help them to prove their current strength and weaknesses okay so these are the basic characteristics of good evaluation concept को टिके देखो जदि न बुझी हला तो मते मेसेज करिवो तो मु तापर ताको कोन सॉल्यूशन बाहिरबो मु कहि the next one is purpose of evaluation why we use evaluation procedure in our school or educational system according to Ogwini educational evaluation is carried out from time to time for the following purpose कोन देखिबा to determine the reflective effectiveness of program in term of students behavioral output प्रथम कथा आसला कोन जो कामटा हमें स्कूल ले करूछु तो प्रोग्राम हमें स्कूल ले कंडक्ट करूछती से प्रोग्राम रो इफेक्टिवनेस ता प्रॉपर होउची कि नाही से प्रोग्राम रो इफेक्टिवनेस हमें केमिति जानिबा ना स्टूडेंट्स बिहेवियरल आउटपुट पिलाकर जो आउटपुट आसीबो से आउटपुट रो हमें जज करि परिबा जे हमरो एग्जाम हमरो जो सिस्टम ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बा हमरो जो इवैल्यूएशन प्रोसेस ता एप्रोप्रिएट और नॉट next asila kono na to determine reliable decision about educational planning okay so here as evaluation helps to the planner like teacher headmaster and other persons with students okay for their educational planning जेतबेला evaluation रे डिटेल पिला को हमें जणाउचती गार्डियन को जणाउचती हमें एज ए टीचर सब कथा पिला बाबत रे जानउचती तार प्रॉब्लम कोठी रहउची को जगह रे रहि जाईची से पिलाटी achievement level तार केते पर्यंत जाईची ए सब कथा जेतबेला हमें क्लियरली बुझी परछती then that is very easier for us to provide help to the individual okay so through the evaluation procedure reliable decision should be taken about the educational planning to ascertain the worth of time energy and resources invested in the program okay तो जो
आमे जो जो रिसोर्सेस को यूज करिसंती गुटे प्रोग्राम सक्सेस करिया पई से प्रोग्राम टा केते दूर सक्सेस हैला कि नाही आमे जानिबा केमिति ना इवैल्यूएशन आमे सिटी टाइम दैछंती आमे सिटी जो किछि पैसा पत्र खर्च करछंती आमे सिटी एनर्जी दैछंती डिफरेंट रिसोर्सेस को यूज करछंती तो एते कथा कला परे हमर इफेक्टिवनेस दरकार तो से इफेक्टिवनेस हैला कि नाही आमे जानिबा केमिति ना बाय द हेल्प ऑफ इवैल्यूएशन अनदर पर्पज नेक्स्ट वन इज टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स ग्रोथ or lack of growth in acquiring desirable knowledge को जगह ताकर प्रॉब्लम हला कोठी हला लैक कोठी रहउची ग्रोथ रो से सब जिंस को जज करा जाई परिबो इवैल्यूएशन थ्रो रे देन ताकर स्किल रो कोन डेवलपमेंट हेछि कि नाही एटीट्यूड डेवलप हेछि कि नाही सोसाइटल वैल्यूज रो डेवलपमेंट हेछि कि नाही ऑल दीस थिंग्स आर मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ इवैल्यूएशन सो अनदर पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन to help teacher to determine the effectiveness of their teaching technique and learning materials गोटे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे जदि पिलाटी भलो पढु नाही बा बुझी पारु नाही केवल जे पिलार प्रॉब्लम ता टीचर जे पढौची ता पाखरे भी किछि प्रॉब्लम थाई पारे ता टीचिंग प्रोसेस रे किछि प्रॉब्लम थाई पारे ता टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जा यूज करछि सेतरे भी किछि प्रॉब्लम थाई पारे सो थ्रू इवैल्यूएशन प्रोसेस वी कैन आइडेंटिफाई दीज प्रॉब्लम्स टीचिंग टेक्निक रे प्रॉब्लम अछि ना टीचिंग मटेरियल लर्निंग मटेरियल रे प्रॉब्लम अछि ताको केमि जानि परिबा नै इवैल्यूएशन पर्पस प्रोसेस रे It helps motivate students to learn more and they discover their progress, lack of progress given task. Okay? Because evaluation is a very fair and open concept. समस्त को पाई सेम, समस्त को पाई open, समस्त को पाई fair. जेतले पिलाटा इवैल्यूएट हेई सारिला से आउ से जानि परला जे आफ्टर इवैल्यूएशन टीचर शुड प्रोवाइड सच टाइप ऑफ जजमेंट अबाउट मी तो ए जगह रे मोर प्रॉब्लम रहिछि तो मु ताको केमिति सॉल्व करिवि तो ए सब कथा पिला निजे analysis करि परिबो by the help of evaluation next one is to encourage student to develop sense of discipline systematic study habits okay जदि मु पढु नाही जदि मु डिसिप्लिनरी एटीट्यूड मेंटेन करू नाही क्लासरूम रे मोर कोन प्रॉब्लम होछि कारण से तो इवैल्यूएशन रे टीचर ताको जजमेंट रे से जिंस देई परला देला सिमिलरली सिस्टमैटिक स्टडी हैबिट डेवलपमेंट मोर होछि कि नाही ए सब जिंस को पिला जज करि परिबो निजे by the help of evaluation result to provide educational administrator with adequate information about teacher effectiveness and school need if we conduct proper evaluation procedure in our educational organizations then that is easier for the administrator those who are administrate supervise the whole educational system okay to identify the teacher effectiveness जो स्कूल ले जो धर जो गुटे पिला क्लास मु गुटे मैथमेटिक्स टीचर ठीक अछि तो मु मो स्कूल रे पिला पाठ पढुछि तो मो स्कूल रे पिला जदि मैथमेटिक्स रे भलो मार्क रखुचंती ता माने मो पाठटा सिस्टमैटिक अछि इफेक्टिव अछि जदि मो क्लास रे पिला कर मैथमेटिक्स पूरा डाउन खराब मार्क रखुचंती ताले मोर टीचिंग इफेक्टिव नुहे कि सिस्टमैटिक नुहे तो एई सब कथा को जज करिया पई हेले काहा को एडमिनिस्ट्रेटर को से इवैल्यूएशन रिजल्ट दरकार इवैल्यूएशन सेही पर्पस रे भी यूज करा होछि to acquaint parents and guardians with their children's performance ताकर पिलांकर जो परफॉर्मेंस को तमे तो सब बेले डाकी पिला को ता गार्डियन को देखि परिबो जे तुम पिला या कला तुम पिला से या कला तुम पिला या कला सेमति कहि होबो सो आमे उटे लास्ट रे उटे जजमेंट दबा विथ वैलिड जो आमे कहि परिबा कोन इन्फॉर्मेशन जे पिला तमरो एई प्रॉब्लम फेस करूची एई जगह रे तार प्रॉब्लम अछि आमे समस्त मिसी ताको हेल्प करबा सो इवैल्यूएशन रो एई पर्पस रे भी ताको यूज करा होछि okay then to identify that might hinder or prevent the achievement to set goal prevent the achievement to set goal which are the problems or hindrance in the process of learning se सब जिंस को आइडेंटिफाई करिया पई इवैल्यूएशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक और प्रोसेस to predict the general trend in the development of the teaching learning process okay कोन को प्रोसेस रे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम नेले हम सक्सेस होबा से ट्रेंड टाको भी बुझिया पे हेले हमको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करिया अछि कारण प्रेजेंट सिनेरियो रे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट रे हम नुवा नुवा जिंस को जदी अडॉप्ट न करूचंती दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज आवर क्लासरूम और टू टीच प्रॉपर्ली टू आवर स्टूडेंट ता पय हम कोन करिया पे पड़बो इवैल्यूएशन प्रोसीजर रे ई सब जिंस को हमको जज करिया पे पड़बो टू एंश्योर इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ scarce resources जो resources अच्छी if we evaluate properly every detail in our school then that is easier for the supervisor or administrator
to find out the effective management process, or economical also. To provide an objective based basis for determining the promotion of students from one class to other as well as award or certificate. तो आमे एई प्रोसेस जदि हम प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करूछुती ताहाले हम पाखरे वैलिड रीजन रहिबो जे आमे काहे पिला को आगो क्लास को जो सक्सीड करूछुती बा आमे तां काहे अवार्ड देले ई सब जिंसर प्रोविजन केते बेले कोउठी रहिबो आमे जानिबा केमिति केते बेले पिला को अपग्रेड करैबा केते बेले आमे पिला को रिवार्ड दबा केते बेले आमे पिला को सर्टिफिकेट दो ई सब जिंसर कथा को आमे बुझिबा केते बेले जानि परिबा केते बेले ना आफ्टर द इवैल्यूएशन. It provides a just basis for determining at what level of education the processor of the certificate should enter a career. Okay, तो को लेवल पर्यंत पिलाटा एजुकेटेड अछि सर्टिफिकेट रे कारण इवैल्यूएशन प्रोसेस रे सर्टिफिकेट रो प्रोविजन होछि तो को लेवल पर्यंत से अछि आगु कोन से करि परिबो ए सब कथा मध्ये जज करा जाई परिबो इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन. So these are the basic purposes of evaluation. Okay, clear to all? The next point, the last point, that is relationship among measurement, assessment and evaluation. ये तीनटा भितर केमिति माने इंटररिलेटेड अछंती केमिति कहा सहित के रिलेटेड कोन कोन डिफरेंसेस रहउची ए सब कथा को हम एठी डिस्कशन करियो. Okay, while going through the discussion about measurement, assessment and evaluation in the previous section, we must have realized that all the three are associated with each other. सब गुडा समस्त सहित एसोसिएटेड अछंती. Evaluation may be considered as an umbrella for that includes measurement and assessment. तो किछि अछंती ए कथा को डिनाई करती आउ किछि अछंती ए कथा को रखंती जे ना ए कथाटा ठीक. तो कथा लागन असेसमेंट आ इवैल्यूएशन एमिति गुटे कांसेप्ट जोटा कि तम डिसीजन ऊपर बहुत मात्रा रे बेस करिवो. तमे कोन चिंता करछो, तमे केमिति बुझुछो, तमे केमिति तम क्लासरूम सिचुएशन तक यूटिलाइज करछो, सेही बेस रे असेसमेंट इवैल्यूएशन रो कांसेप्ट को तमे डिफाइन करि परिबो. किंतु आमे जनरली ए कथाटा को एमिति बुझंती कोन ना मेजरमेंट टू ब्रॉडर के असेसमेंट, असेसमेंट टू ब्रॉडर के ना इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन भितरे बोथ केसेस आसुची, असेसमेंट भी आसुची, मेजरमेंट भी आसुची. ओके, तो कौन कौन रिलेशनशिप रहिला देखिबा with examples. This relationship can be further explained as measurement focuses mainly on quantifying. Measurement आमे ऑलरेडी डिस्कशन करछनी क्वांटिफाइंग को बेसी फोकस करिवो ऑफ द वेरिएबल. असेसमेंट कोन करिवो ना क्वालिटी को देखिवो, केते दूर क्वालिटी केते दूर आगु जाउची, कोन प्रोग्रेस हला कि नै से सब जिंसो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट रे आमे मेजर करथि. आउट जिंसो आमे एठी ऐड करिवा कोन ना वैल्यू जजमेंट जोटा कि इवैल्यूएशन रे हुए. कोन हुए एठी एग्जांपल ले देखियो. Ramesh scored 65 mark in mathematics in the final year examination, which is above average performance. Yes, 60% above mark रखिला माने आमे जानु जे से above average individual, but he is not perform well in test item related to trigonometry. किंतु trigonometry जो क्वेश्चन आस्तिला सेही क्वेश्चन सब कुछ भूलभाल करछि. Ramesh has improved significantly compared to his half yearly examination. ए टोटल टा गुटे कंडीशन दला. ठीक अछि, बुझो कथाटा ए जो जति कि म पढिली दैट इज ए कंडीशन. ओके, जो कंडीशन ले कोन हला फर्स्ट कथाटा कोन कोन तीनटा कथा एठी अछि भलो से देखो. प्रथम कथा कोन 65 मार्क रखिछि गुटे कंडीशन. सेकंड कंडीशन कोन ना जो पुअर परफॉर्मेंस ट्रिगोनोमेट्री रे पुअर परफॉर्मेंस ओके, पुअर परफॉर्मेंस रहिला को ट्रिगोनोमेट्री रे. लास्ट कोन ना इंप्रूव हेछि कोठी ना हाफ इयरली एग्जामिनेशन. तीनटा कंडीशन से देला. ए जो कंडीशन रे इस पूरा होल स्टेटमेंट रे तीनटा कथा को आमे फोकस करिवा. प्रथम कथा हला मैथमेटिक्स रे 65 मार्क रखिछि, ट्रिगोनोमेट्री रे पुअर परफॉर्मेंस अछि, आउ लास्ट जो हाफ इयरली एग्जामिनेशन को ए जो एग्जामिनेशन का परफॉर्मेंस रे इंप्रूव हेछि. कोटा कोठी रहि 65 मार्क जोटा रखिला दैट इज इंडिकेटर न्यूमेरिकल डाटा. तो एटा तुम बुझ जाउथो एटा मेजरमेंट लाइक एबव एवरेज परफॉर्मेंस जो कथा हम कहले एबव एवरेज परफॉर्मेंस. आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट को एरिया रे तार इंप्रूवमेंट ऑफ असेसमेंट कथा को रहिला कम अंडर असेसमेंट.
and judgment of his performance related to half yearly examination is evaluation. ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାର ହାଫ୍ ଇୟରଲି କେତେ ଥିଲା ମାନେ ଯୋଉ ଇୟର ଏନୁଆଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପାରିଜନ କରି ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି दैट इज आवर जजमेंट ତ ଏଇ ଜଜମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଇଭାଲୁଏସନ ବୋଲି କହିବା ସो 65 ମାର୍କ ଦେଲେ मेजरमेंट एभव एवरेज परफॉर्मेंस ହେଇଛି बट ट्रिगोनोमेट्री रे बेसी फोकस करियार अछि सेठी अंडर असेसमेंट रहिबो फीडबैक दिया जिवो नेक्स्ट आसला कोन ना एज कंपेयर टू द हाफ इयरली एग्जामिनेशन इन एनुअल एग्जामिनेशन ही स्कोर मोर मार्क तो ए जो डेवलपमेंट ହେଇଛି दैट इज द लास्ट जजमेंटल स्टेटमेंट इन इवैल्यूएशन प्रोसेस ओके I hope all are understanding the concept of measurement, assessment, and evaluation and their relationship. तो ये कथाटा को आउ टिके क्लियर करके डिफाइन करा ହେଇଛି देखो इवैल्यूएशन जो ब्रॉडर सेंस रे रहिला जोटा कि तमरो मेजरमेंट आउ कथाटा कहउछन दैट इज क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन असेसमेंट जोटा कहउछन सेटा क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन विथ वैल्यू जजमेंट जेतेबेले हो ओवरऑल से इवैल्यूएशन को करियो इवैल्यूएशन से कहउछ देखो मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट इवैल्यूएशन असेसमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट भी होबो एडी गुडा कथा को हम टिके एडी देखिबा इवैल्यूएशन मेजरमेंट प्लस असेसमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट ये कथा भी हेबे ता माने एडी गुडा कथा रहिला जे मु मेजरमेंट करी की जदि मु वैल्यू जज कर दोची सी इवैल्यूएशन को पळै जिवो एटी नो नीड ऑफ असेसमेंट मु असेसमेंट करी की वैल्यू को जदि जजमेंट कर दोची सी भी इवैल्यूएशन को पळेबो नो नीड ऑफ मेजरमेंट आउ बोथ मेजरमेंट आउ असेसमेंट करी की लास्ट में वैल्यू जजमेंट कली तापर इवैल्यूएशन को मु गली दैट इज आल्सो राइट कांसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन so from the above three concepts of evaluation now it is clear that without value judgment there is no evaluation value judgment bina evaluation he paribo nahi clear to all okay so these are all about your test then examination appraisal then measurement then assessment evaluation and relationship okay तो जहार जो प्रॉब्लम रहिला if you face any problem in this session you can write any queries in your comment box and I can try to solve all the queries all the problems of you thank you